हेलो पीपल आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट भाई। फाइनल फैंटेसी वापस आ गए हैं भाई। पार्ट 5 है आज तो लेट्स गो भाई। पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं गेम को। साउंड इज़ ऑन। चैट सेट कर लेता हूँ मैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। आज भी हम रात को स्ट्रीम करना है भाई। कोशिश मैं शाम को ही करता हूँ आने की, बट दिन को ही रात को ही आना हो रहा है आजकल। बट कोई नहीं भाई, इस गेम को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा ऑडियंस में देख रहा हूँ भाई। फाइनल फैंटेसी एक तो बहुत लंबा गेम है। अब मैं चाहता नहीं कि एंड में मैं छोड़ दूँ इसको करना। एक दो लोग यार, नेक्रोमेंसर यो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, क्या हाल चाल है भाई के? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। मैं वही सोच रहा हूँ कि फाइनल फैंटेसी देखने ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यार, है ना। बट अब जब मैंने गेम शुरू कर ही दिया है तो मैं ना चीज़ को आधे पे नहीं छोड़ना चाह रहा, इसलिए मैं इसको कंप्लीट तो करूँगा, पूरा कंप्लीट करूँगा। उसी के बाद अब कुछ और शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन ही गेम्स शुरू करने पड़ेंगे यार, दोस्तों को बुला के किसी के साथ, उसमें ही ज़्यादा ऑडियंस आती है, इतना मैंने नोटिस कर लिया है इंडिया में। तो ऑनलाइन गेम्स पकड़ने पड़ेंगे। PS+ एक्स्ट्रा का सब्सक्रिप्शन रखना पड़ेगा। एक हेल डाइवर्स 2 करके ऑनलाइन गेम है, वो भी आ रखा है, क्योंकि स्टोरी मोड सिर्फ तब खेलने में फ़ायदा है जैसी कोई नया गेम आ रहा है ना स्टोरी मोड, और लोग उसको देखना चाह रहे हैं। और आजकल सारा टाइम सामान पैक करने में जाता है, बेलदारी करने में। सामान पैक? किस चीज़ का सामान पैक ब्रो? कैसा सामान पैक? किस चीज़ का सामान पैक कर रहे हो तुम? चलो भाई गेम स्टार्ट करते हैं। अब स्टोरी मोड गेम ना, पुराने गेम्स या तो फिर बिल्कुल रेट्रो टाइप के गेम खेले जाएंगे, अगर पुराने जैसे 2D साइड स्क्रोलर जो बहुत मस्ती होती है, जिसमें लोग देखने में मज़ा आ रहा होता है लोगों को, वैसा कुछ खेला जाएगा। अगर मैं ऐसे गेम खेलता रहूँगा ना लंबे लंबे, फाइनल फैंटेसी सही है, जब जिस वक्त आएगा एकदम नया आया होता फाइनल फैंटेसी, मैं तब खेल रहा होता तो बहुत सही रहता। बट जैसे ही तुम तब खेलो ना जब, क्या बोलते, रहता नहीं है गेम, मतलब पुराना हो जाता है थोड़ा, तो तब थोड़ा, या तो तुम बहुत बड़े यूट्यूबर हो या कुछ हो तो बात अलग है, नहीं हो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उसमें से। बट कोई नहीं, एक दो बंदे भी आए देखने भाई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है फिलहाल तो। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं गेम यार, क्योंकि बहुत बड़ा गेम है ये। अभी 42% हुआ है। हर दिन मैं इसको 10% पार कर पा रहा हूँ, 3-4 घंटे खेलने के बाद भी। 3-4 घंटे खेलने के बाद भी गेम 10% पार हो रहा है। No one survived then. I'm sorry. कल का रिकैप था, उन्होंने सारे बेयरर्स को मार दिया था, जो मार्था जिनको शेल्टर करके रखती थी। Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said चर्च you था वो, cast क्या their था? remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. और टाइम स्किप भी हो गया है। You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now,
I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again I and have a pretty threaten big my sword, people, bro. they're in for a Yo, rude real awakening. M&M, welcome to the stream, bro. Oh, before Wah, I ji, forget, wah. a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be... We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. अभी पढ़ता हूँ एक मिनट सारे Though I chat. wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. अच्छा, ये कल की क्वेस्ट जो आधा बस इससे बात करना बचा था वो अभी कंप्लीट हो गया. ये तो कल रात को ही कर लेना था. बैकवर्ड कैन बी ट्रेडेड फॉर गिल. ओके. हाँ गाइस, क्या बोल रहे हैं? हाँ ब्रो, आज कुछ ब्रो मेरा फ्रेंड जेन तक जो एपेक्स स्ट्रीम करता है वो अपने फ्रेंड्स बुलाता था स्ट्रीम पर. सही रहता है. अच्छा अच्छा, हाँ उसके लिए फ्रेंड भी तो होना चाहिए. घर शिफ्ट कर रहा हूँ ब्रो इस मंथ. अच्छा अच्छा, घर शिफ्ट कर रहा है. ओके ओके. हाँ भाई, रियल M&M, क्या हाल चाल है तुम्हारे? अभी भी राइवल्स चल रहा है क्या फुल पावर सिडनी और फ्रैंकफर्ट में? राइवल स्ट्रीम चल रही है फुल पावर. चलो भाई, रिटर्न टू द हाइडवे. चलो मुझे हाइडवे पे वापस जाना है. ओ, प्लस साइन वाली वो, ये प्लस साइन वाली से भाई मुझे वो मिलेगा. You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? And not just any chocobos. मैं ये स्किप करता रहूँगा. हाँ, डायलॉग्स मैं अगर पढ़ लूँगा नीचे पूरा तो मैं स्किप कर दूँगा. पूरा बोलने क्या देना है उनको, ज़रूरी नहीं है. Protect travelers round these parts from bandits and the like. Chocobos? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now... Oh, go on then. Don't just stop. All right. इस वाली साइड क्वेस्ट से मुझे I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us local. And don't worry, you'll know her when you see her, right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. वाइट विंग्ड वंडर. हाँ, ये क्वेस्ट है भाई, ये क्वेस्ट है. इससे मुझे वो भी मिल जाएगी शायद. माउंट मिल जाएगा मुझे, माउंट मिल जाएगा इससे. ये वाली क्वेस्ट करते हैं. चलो, जो भी प्लस वाली क्वेस्ट है ना इस गेम में, प्लस वाली साइड क्वेस्ट है जिसमें प्लस का साइन आएगा, वो गियर वगैरह या ऐसी चीज़ मिलेगी उससे जो मेरे गेम में काम आएगी मुझे बहुत. तो ये बढ़िया बात है. पहले तो मैं ये यहाँ पे क्या है, ये लूट. अब मैंने ये गेम खेलना शुरू कर ही दिया ना, इसको मैं पूरा ख़त्म करूँगा. मैं नहीं चाहता कि चीज़ को मैं आधी स्ट्रीम पे छोड़ दूँ. आधी स्ट्रीम पे छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता चीज़ें. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. भाई एपेक्स कब से खेलना है? भाई एपेक्स तब खेलना है ब्रो जब गेम ख़त्म हो जाएगा. ये तब से एपेक्स खेलना है. एक बार गेम पूरा हो जाए तब एपेक्स खेलेंगे वापस से. रात को खेलता तो था मैं, बट आजकल मैं दिन को स्ट्रीम नहीं कर पाया तो इसलिए मैं रात को कर रहा हूँ.
अब एक बार भाई गेम शुरू कर दिया ना तो वो आधे में छोड़ना बेकार लगता है फिर मुझे। We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I एंड ज़रूर खेलेंगे भाई। मैं भी सोच ही रहा था कि एपेक्स खेलते हैं किसी दिन वापस से, किसी दिन क्या वापस से ग्राइंड करेंगे एपेक्स। Around here they weren't. राइवल्स भी ग्राइंड करने की सोच रहा था यार मैं। Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. मुझे पता है ब्रो पॉलिटिक है तू, How about we पता है hurt मुझे you पॉलिटिक है। Alright then. But इतना don't मुझे say पता है I ब्रो। know you. यू आर एडेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, इसलिए मुझे पता है तेरा नाम। आई नो यू पॉलिटिक बोल रहा है, पर इतना टाइम नहीं मिलता ना ब्रदर कि एपेक्स भी खेलूं, स्ट्रीम भी करूं, दूसरा गेम भी खेलूं। उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। एपेक्स में तभी खेल पाऊंगा जब ये गेम कंप्लीट हो जाएगा मेरा। आज ये 50% हो जाएगा कंप्लीट, तब मुझे लग रहा है 10 स्ट्रीम तो चाहिए ही इस गेम के लिए। मतलब 5 स्ट्रीम हो गई है, 5 स्ट्रीम और चाहिए होंगी, मतलब 5 दिन और लगेंगे मुझे लग रहा है। या तो किसी दिन मैं और ज़्यादा खेल के इसको जल्दी एंड करने की कोशिश करूँगा, बट मुझे करना ही पड़ेगा एंड ना गेम। विदाउट एंड करे हुए मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। मुझे अच्छा भी लग रहा है ये गेम, क्योंकि गेम भी अच्छा है, तो एंड तो करना ही पड़ेगा। बट वही है, इस गेम से इतना ऑडियंस वगैरह आती नहीं है क्योंकि पुराना गेम है ना। स्टोरी मोड में अब मैं वही सोच रहा हूँ अपना कि स्टोरी मोड वही गेम खेले जाएं जो नए आ रहे हैं। पुराने स्टोरी मोड गेम फिर या तो इंडी गेम्स ही चलते हैं ज़्यादा ना, जो प्यारे प्यारे से रहते हैं, निंटेंडो टाइप वाले गेम, वही ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं। ये गेम लोग देखते हैं, बट वही है कि जब नए नए आते हैं ना उसी वक्त देखते हैं लोग। बाद में अरे पर अब मैंने पकड़ ही लिया गेम, तो मैं कर क्या सकता हूँ यार अब। अब गेम पकड़ ही लिया ना तो फिर वही है। स्टैगर्ड टाइम वाला कंट्रोलर गया। टाइम वाला कंट्रोलर मतलब टाइम वाला कंट्रोलर मतलब अच्छा TMR वाला ऑटो करेक्ट हो गया क्या? TMR वाला कंट्रोलर आ जाएगा। आज मैंने उसका पेमेंट कर दिया, रिपेयर तो हो गया था वो पूरा, रिपेयर हो गया पूरा, वो आ जाएगा।
वो आ जाएगा अभी। अभी तो एक ही कंट्रोलर चला रहा हूँ मैं। हाँ ऑटो करेक्ट, मेरे को लग ही गया था ऑटो करेक्ट होगा। स्टील सिल्क यूज्ड इन क्राफ्टिंग फॉर। थोड़ा छोटा गेम पकड़ना चाहिए था मुझे लग रहा है। फाइनल फैंटेसी बहुत लंबा गेम है। You're safe now. अब मुझे माउंट मिल जाएगा, अब मैं आराम से ट्रेवल कर सकता हूँ। Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. ओह Ambrosia. अबे ये वही है It's you. You survived. कि बचपन वाली। डायमंड जाना है जरूर भाई, जरूर जाएंगे। अभी तो नया सीजन शुरू ही हुआ है ना, बस ये गेम खत्म हो जाए उसके बाद वापस एपेक्स शुरू करते हैं। मैं खुद वेट कर रहा हूँ। I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, well, you sorted the bastards then. I knew you would, and the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. मुझे खुद मन है एपेक्स खेलने का यार। वो तो मैं आधी उस पर छोड़ना नहीं चाह रहा ना गेम को, स्टोरी में। एक बार ये पूरा हो जाए तो उसके बाद एपेक्स खेलेंगे। I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her. खुद मन है भाई। Princely son. You born a lord. अरे यार जब एपेक्स खेल रहा होता हूँ तो बंदे आते नहीं। जब छोड़ दो तब बंदे आने लग जाते हैं। ये भी तो होता है। No matter who you are, you done right by me. मैंने एपेक्स वैसे ऑफ स्ट्रीम भी ग्राइंड कर ही रहा था मैं, She wants her बट अभी master कुछ दिन back, से I नहीं खेला reckon. मैंने, 2-4 दिन से नहीं खेला। क्योंकि मैं FC26 में FC भी खेल रहा था थोड़ा ना, डिवीजन 4 में था उसमें, मैं ऐसी टाइम पास के लिए Seems FC our भी खेल रहा pals था। agree. उसमें बंदे मेरी ऐसी की तरह, You want to come with me? उसमें बंदे मेरी ऐसी की तैसी कर रहे थे भाई। Well, FC में। bugger me if this ain't a heartwarming डिवीजन sight. 5 में। Lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, अब जैसे ये गेम खेलूंगा इसके बाद मैं रात को थोड़ी देर FC खेलूंगा। 3-3.5 घंटे स्ट्रीम की, फिर थोड़ी देर FC खेला, फिर सो गए। एपेक्स तो एकदम, फिर एपेक्स तो खेलना और मुश्किल हो जाता है। एपेक्स फिर पूरा ध्यान एपेक्स में ही देना पड़ेगा। doesn't she ले भाई come मेरा माउंट भी handsome खुल गया। fairy? She does indeed. How much do I owe you? Ah, few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you.
बताओ भाई, मैं देखता रहता हूँ लड़कियां स्ट्रीम कर रही होती है ना भाई। सारे लौंडे भाई लड़कियों की स्ट्रीम पे पहुंचे रहते हैं भाई, सारे लौंडे लौंडियों की स्ट्रीम पे पहुंचे रहते हैं भाई। बट हम साले मेहनत करते करते थक जाते हैं, बहनचोद हमारी स्ट्रीम पे नहीं आता कोई। हेलो भाई, क्या हाल चाल? यो नो एम जोन, क्या हाल चाल है ब्रदर? क्या हाल चाल है? मैं सही यार, मैं सही। तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया, सब खैरियत ब्रदर, सब खैरियत। भाई ये गेम बढ़िया है ये ना। हाँ भाई ये बहुत अच्छा गेम है यार। चोकोबो अनलॉक्ड, लेट्स गो भाई। मेरा चोकोबो अनलॉक्ड हो गया, चोको। अब मैं इस पे माउंट कर सकता हूँ। मुझे किससे माउंट होगा? After 18 long years, Clive finally reunited with his faithful steed, old R3. In the field, summon Ambrosia and X to mount on Chocobo. Let's go! Let's go! Let's go! बस यार मैं भी ठीक यार, मैं भी ठीक यार। कट रही है बस। कट रही है बस। मुझे ट्रैवल इधर ही ट्रैवल कर देते हैं डायरेक्ट। मैं वहाँ कैसे जाऊँगा यार? मुझे मिशन पे जाना है ना। रन टू हाइडवे। हाइडवे पे जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा मुझे? अच्छा, हाइडवे के लिए मुझे पूरा मैप पे जाना पड़ेगा ना। लेट्स गो। गेम बहुत अच्छा है ब्रो, इसीलिए मैं इस गेम को ना बंद नहीं करना चाह रहा बीच में यार। फिर गेम पूरा ना करो तो लोग ये भी सोचते हैं कि साले ने आधा गेम खेला, आधा। ऐसा मैंने हाई फाई रश के साथ किया था यार। हाई फाई रश इतना अच्छा गेम है ना, और मैंने तो वो ख़रीदा था जबकि बकायदा। ये तो चलो मुझे PS एक्स्ट्रा में मिला है, वो मैंने ख़रीदा था। वो गेम भी पार नहीं किया यार मैंने, वो करना चाहिए था मुझे पार। मंडे को गया था मार्केट बट नहीं मिला GPU जो मुझे रिक्वायर्ड था। अच्छा, सैड ब्रो। तो फिर क्या सीन, तब क्या फिर? Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. ये दूसरा You क्रिस्टल remember है। how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. मैं पानी, अपना पानी भूल गया यार मैं। 1 मिनट गाइस। पानी की बोतल के बिना तो कहाँ काम चलता है यार। कल वापस जाऊंगा, शॉप वाला बोल रहा था 1-2 दिन में आ जाएगा न्यू स्टॉक यूज्ड GPU। सेकेंड हैंड GPU ले रहा है क्या? मतलब कोई बुराई नहीं है उस चीज़ में, बट जस्ट आस्किंग। सेकेंड हैंड ले रहा है क्या तू? यूज्ड, रिफर्बिश्ड भी बोलते हैं उसको आई गेस। फैंसी टर्म। Bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. अच्छा, ओल्डर मॉडल। अच्छा अच्छा अच्छा, And यूज्ड में now the आते हैं। Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek.
lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to Box starve नहीं the आते. Imperials into अच्छा. submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. But वो used रहते हैं क्या? They'll never see us coming. Used रहते हैं मतलब ना? Just used GPUs. हाँ, second hand means second hand It's GPUs. time we moved on the mother crystals. क्योंकि वो उनका प्रोडक्शन बंद हो गया इस वजह से ना, राइट? प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो फिर यूएसडी में आएंगे वो, है ना? 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rossfield. And you're a Rossfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. बाहर से आते हैं इंपोर्ट होके, फॉर एग्जांपल यूएसए दुबई. हाँ ब्रो, अंटिल बस जब सही है, अगर अच्छी चीज़ है तो सेकंड हैंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? अच्छी चीज़ होनी चाहिए. कोई वारंटी वगैरह देते हैं उसमें वो यूज़ जीपीयूज़ में, मतलब अपनी साइड से कोई वारंटी होती है या अलग से कुछ, मतलब पे करके कुछ वारंटी देते हैं वो ऐसे? भाई मॉन्स्टर हंटर खेलना है. हाँ मॉन्स्टर हंटर भी तो वही है, आरपीजी JRP, जापानीज ही है मॉन्स्टर हंटर ना, कैपकॉम का है ना मॉन्स्टर हंटर. फोटोज काउंटर इज नाउ ओपन. कंप्लीटिंग साइज. इनकी तो ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं मुझे साइड मिशंस की. मॉन्स्टर हंटर खेल ले ब्रो, मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड वर्सेस. मैंने मॉन्स्टर हंटर कोई भी नहीं खेला यार, टाइम ही नहीं मिला मॉन्स्टर हंटर कभी खेलने का. फिर मैंने बोला छोड़ो मॉन्स्टर हंटर क्या खेलना, ये तो थोड़ा मेरे टाइप का गेम है ना. मैं फाइनल फैंटेसी के ज़्यादा पार्ट्स वैसे खेलता नहीं था, मैंने मूवीज़ वगैरह देखी हुई हैं 1-2 फाइनल फैंटेसी की. आप बताओ खेलते हैं साथ में यार. मॉन्स्टर हंटर क्या वो एक्स्ट्रा में है क्या अवेलेबल? मॉन्स्टर हंटर हेल डाइवर्स आ गया है भाई एक्स्ट्रा में, PS एक्स्ट्रा में. मैं हेल डाइवर्स सोच रहा था एक बार खेलने की. खेलना है क्या हेल डाइवर्स? बता. मेरा एक और फ्रेंड है, उसको भी बोला हुआ है मैंने हेल डाइवर्स के लिए. तो अगर खेलना है देखो तो तू बता सकता है, हम खेल सकते हैं. हेल डाइवर्स भी खेल सकते हैं. एपेक्स तो खेलना ही खेलना है, एपेक्स तो खेलना ही खेलना है. एपेक्स तो खेलना ही खेलना है, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है. हेल डाइवर्स खेल सकते हैं. मॉन्स्टर हंटर भी तो, मॉन्स्टर हंटर तो वही है ना कि उसमें एक टाइप से वही हुआ जैसे ब्लैक मिथ वूपोंग में. मतलब उससे कंपेयर नहीं कर रहा है, पर हाँ उसमें सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं और हम कोऑप खेल सकते हैं उसको, और मॉन्स्टर हंट करना होता है बस सारे जो भी, मतलब अलग अलग मॉन्स्टर हंट्स करो, स्क्रैप करो. पर मुझे ना वो गेम्स थोड़े ज़रा कम इंट्रीगिंग लगते हैं. मतलब अच्छे गेम्स होते हैं वो, तभी मैंने विचर भी छोड़ दिया था, जिसमें ना ज़्यादा लूट और उससे फ़र्क पड़ता हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लूट अपने पास रखनी है और ये करना है वो करना है.
वो बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती है मॉन्स्टर हंटर में, इसलिए मैंने मॉन्स्टर हंटर कभी नहीं खेला। उसमें बहुत ज़्यादा लूट मैनेज करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स वगैरह करते रहने पड़ते हैं। लोगों को वो चीज़ पसंद आती है, मुझे ना ओवर कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं वो चीज़ें, ओवर कॉम्प्लिकेट करती हैं मेरे लिए वो गेम को। मेरे को DMC टाइप का सिंपल एक्शन गेम ज़्यादा पसंद आते हैं, जिसमें मतलब मैं सिंपली एक्शन खेल पाऊँ। तभी तो मुझे ये DMC, अबे यार इसमें यहाँ से कहाँ से जाऊँ मैं, ये क्या है? तभी तो मुझे DMC भी बहुत मतलब ये गेम इसलिए पसंद है कि DMC वाले डेवलपर्स ने ही इसका कॉम्बैट वगैरह वो किया है ना, बनाया, तो बिल्कुल DMC वाली फील आती है इस गेम को खेलते हुए। कब खेलना है? बस यार एक बार ये गेम खत्म हो जाए ना, उसके बाद खेलते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मैं अकेले स्टोरी मोड नहीं खेलूंगा स्ट्रीम पे जब तक वुल्वरीन आता है, मैं सीधे वुल्वरीन ही खेलूंगा। मैंने वो साइलेंट हिल भी डाउनलोड किया हुआ है, सीजन्स खेल लूंगा मैं एक वीकेंड पे किसी दिन चिल करने के लिए, जिस दिन एपेक्स और हेलडाइवर्स खेल के, या हेलडाइवर्स डाउनलोड कर लिया तो वो खेल के, या एपेक्स खेल के, ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा तो सीजन्स एक दिन चिल करने के लिए खेल लूंगा मैं। Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to... It's good to know there's something of the old hype. Martell's pride and joy. तो It was a sapling when she rescued हेलडाइवर्स डाउनलोड कर लूंगा मैं भी, वो भी खेल लेंगे। बाकी किसी एक दिन सीजन्स खेलूंगा बस मैं, क्योंकि वो खेलने का मेरा बहुत मन है। 5-6 घंटे का कैंपेन है उसका, तो वो तो मैं किसी वीकेंड पे 5-6 घंटे स्ट्रीम में एंड कर लूंगा। Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. मुश्किल से 2 दिन के भी स्ट्रीम नहीं होगी उसमें। On account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. It'll be nice being the bearer of good news for... She always had a soft spot for that lot, see? And once they... साइलेंट हिल भी किया हुआ था वैसे मैंने डाउनलोड, Here you go. साइलेंट हिल भी किया हुआ था वैसे मैंने डाउनलोड की। साइलेंट हिल खेलूंगा, पर उसको देखते हैं बाद में खेलेंगे। अब डायमंड वाला चैनल, अब डायमंड का चैलेंज लेते हैं फिर इस गेम के बाद एपेक्स में, और हेल डाइवर्स भी खेलेंगे साथ साथ खेल लेंगे। थोड़ा एपेक्स थोड़ा हेल डाइवर्स। हेल डाइवर्स का आजकल मैंने सुना ज़्यादा अच्छा वो चल नहीं रहा सीन, बट खेलते हैं क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया और गेम भी अच्छा है, ग्राफिक्स भी अच्छे हैं हेल डाइवर्स के, तो वो ट्राई करते हैं, वो खेलते हैं साथ में। और एपेक्स डायमंड का एम करते हैं फिर अब इस बार, फिर उसके बाद मास्टर्स का भी करेंगे अगर कर पाए हम तो पर पहले डायमंड तो हो जाए, बस ये गेम हो जाए यार मेरा, फटाफट फिनिश कर दूं बस इसको यार। मैं इसको आधे पे छोड़ना नहीं चाह रहा गेम को यार बिल्कुल भी, अभी इसको मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। अच्छा गेम है यार ये, और इस गेम में ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं की हुई चीज़ें भाई, ज़्यादा लूट बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं करनी पड़ती, सिंपल पोशन वाला तरीका है, सिंपल वेपन अपग्रेड्स हैं, वेपन अपग्रेड करो, जो ज़्यादा पावर वाला है वो लगा दिया, है ना, सिंपल चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा RPG एलिमेंट्स एकदम ऐसे, मुझे ना बहुत ज़्यादा लोगों को ज़्यादा RPG एलिमेंट पसंद आते हैं। ग्राफिक बेकार है हेलडाइवर्स के, हेलडाइवर्स 2 की बात कर रहा हूँ, वो हेलडाइवर्स 2, हेलडाइवर्स 1 नहीं, हेलडाइवर्स 2। Look like you could use something to eat. Yeah. हेलडाइवर्स 2 की बात कर रहा हूँ, हेलडाइवर्स 2 अभी PS एक्स्ट्रा में आया, उसके ग्राफिक्स तो अच्छे हैं ब्रो गेम के। Now, where have I heard that name before? Weren't she the girl from the Furrows? Of course she was. Aye, and brave as a bane might. हेलडाइवर्स 2 की बात कर रहा Back हूँ। into the hideaway to collect them trees when Titan attacked. These aren't those apples, are they? She'd have been proud, and rightly. ग्राफिक्स अच्छे कैसे नहीं है यार उसके ग्राफिक्स तो अच्छे हैं काफ़ी, कुछ गलत फहमी हो गई है मुझे लग रहा तुझे, उसके ग्राफिक्स तो काफ़ी अच्छे हैं ब्रो, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं उसके तो। एक दिन खेल रहा था, अच्छा मैंने खेला नहीं है ब्रो,
तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकता कि बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं, पर जितना मैंने देखा है यूट्यूब वगैरह पे तो अच्छे ही लग रहे थे. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. जितना मुझे आइडिया है इसमें एक एक करके सब क्रिस्टल्स डिस्ट्रॉय करेंगे ये और फिर गेम खत्म हो जाएगा. भाई मैं अभी तक प्लैट नहीं आया. अबे ब्रो प्लैट तो आजा ब्रो. मैं तो learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. प्लैट तो मैं 5-6 दिन मतलब हफ्ते भर पहले ही आ गया था. प्लैट तो जो मेरी लास्ट स्ट्रीम है एपिक्स की उसमें आ गया था प्लैट तो मैं. Face it together then. इस गेम से ठीक पहले वाली स्ट्रीम. To the end. प्लैट 4 के हाफ पे हूँ मैं अभी. अभी वापस आएंगे तो वहीं से शुरू करेंगे. Bloodlines. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Yeah! ये सही चीज़ है. अब इससे मैं आराम से जल्दी जल्दी तो जा सकता हूँ. टीम बेकार आ रही है. ये तो सबसे कॉमन इशू है भाई. एपेक्स का ये तो सबसे कॉमन इशू है एपेक्स का. ये चीज तो कभी खत्म नहीं होगी ब्रो. मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है यार एपेक्स खेलने का. That she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. It would be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. अभी तो खेल नहीं रहा होगा तू गेम. रात को नहीं खेलता ना तू. Business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. He dancing a gallows jig like the miller's son. All right, I heard you the first time. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprit. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions? 100? I heard it were 1,000. We're going hunting for outlaws. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen him, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere.
And they thought we might be harboring firebrands. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. कौन हो सकता है भाई वो ally? Next village. That'll do, girl. No use calling Ambrosia now. That's a fair old scar. मुझे पीछे से जाना तो पड़ेगा यार. How'd you get? मैं गलत जगह से जा रहा हूँ. Let's go. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Ever since the Apology, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The Mother Crystal's collapse? I have an idea. You're not going to like it. बेफालतू की फाइट. All right.
जहाँ पे लूट दिखती है वहाँ तो भाई मारने ही पड़ते हैं। Fly, Ambrosia. More of my mother's men. मदर्स मैन, इसकी मदर ही है साली सबसे बड़ी रणवी। साली इसकी मम्मी बहन की लोड़ी वो सबसे बड़ी रणवी है। ओए बताओ यार कैसी हरामी औरत है यार वो। Blood, Clive. वो साली भैंचो गेम की स्टार्टिंग से नहीं पसंद मुझे वो औरत। कौन दिख गया इसको? ले। You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are, and still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an गांड interrogation. मारूंगा ना तुम्हारी अगर To फाइट करोगे dwell in मुझसे तो। darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. चूतियों, अबे लेवल 24 के चूतियों, ये देखो तुम, ये देखो अभी, ये देखो तुम, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक और बार लो 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 लो। सालों तुम लड़ोगे मुझसे, तुम साले 2 कौड़ी के। ये लो ये लो। ये 2 कौड़ी के बंदे। ओ भाई इनकी हेल्थ तो वैसे देर में जा रही है, ब्लैक शील्ड की हेल्थ। आ जाओ लड़ोगे। Black shields my ass, bro. Black shields my ass. ओ भाई यार ये हीलर है इन पे, तभी मैं बोलूं बहनचोद। दिमाग खराब यार, इनका हीलर को मारो सबसे पहले। गया इनका हीलर। अब कौन हील करेगा तुम्हें सालों? अब कौन हील करेगा तुम्हें? आ जाओ आ जाओ। तब से ये हील हो रहे थे ना, तभी बोलूँ मैं। साले ब्लैक शील्ड्स बहन के लोड़ो। ब्लैक शील्ड्स हैं, ब्लैक शील्ड्स। ब्लैक डिक लो तुम बहन के लोड़ो। फकिंग चूतिए। हीरो बन रहे थे मेरे सामने दादा। अब क्या हो गया भाई? हाँ अब क्या हो गया? अब क्यों लेटा हुआ भाई? अब क्यों लेटा हुआ? उठना बहनचोद, अब उठ। क्या हो गया? क्या हो गया? Tell me what I want to the end will be swift. सही What are में। you looking for? Why, you? We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Guardians of the Flames.
Find something, boy. Death. Death. काजू कतली आ रखी है भाई आजकल यार. काजू कतली खाऊंगा. What? Bro, ये क्या है? This was my mother's doing. भाई इसकी मम्मी, इस बहन चोद इसकी मम्मी पे मुझे. Why would anyone? I don't know. मतलब कितना हरामी हो सकता है I कोई? never truly understood her. But this. Oh, Clive. Like seriously भाई. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. भयंकर, ये वही लोग थे शायद जिनको हमने बचाया था. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Not here. We're approaching Buick Bridge. No, I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. I can walk from here. They're all Rosarian. But this is their home. Ambrosia won't help me here. Fly, Ambrosia. चूतिया पा भाई. अब इसकी मम्मी बहन जो गेम की स्टार्टिंग से ही हरामी सी औरत लगती थी. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. कैसी हरामी औरत है भाई. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Let us pass! My children are starving! Have mercy! ये क्या हो रहा है? Voice-ridden dogs they are! You can't ignore us forever! Let us in or we'll die on your doorstep! Better out there than in here. Oh, good enough for everything! Fuck off. Hang it, chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your stalls. Cut you down where you stand. Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in?
Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Okay, we have to find an entrance to Lazarus district. This is not like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Not abandoned then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. I see they are not friendly. Okay. Asking for a fight? Not. Let's go. Let's go, bitches. ये वाला ये हीलर है इनका, ये हीलर है ना. इसी को मारो सबसे पहले बहन चोद इसकी माँ हीलर कहाँ है हीलर 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 ये वाला है हीलर बच्चे थे ये तो सारे I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. मुझे पहचान में आ रहा है बंदा Blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Huh? Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. We can speak inside. ये बंदा याद है मुझे And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far.
and we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. Let's go. We are gonna help these guys now. I was hoping you'd say that. Why not, bro? Why Very not? well. I'm a hero, bro. If that Hero is helps your wish, everybody, bro. I would be honored to serve at your side. Let's go. Let's go, And we mate. at yours. So Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Let's go. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. We'll show him as much mercy. Tell us then, Sir Wade. What is your... Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buick Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Let's go. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall.
Throughout the main scenario, Clive will often be joined by various companions who are keen to lend their assistance. However, depending on Clive's destination, they may choose to remain behind at the hideaway. Okay, got it. अब कहाँ जाना है मुझे मैप में? इधर, okay. May the blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Look at me sideways. Come along now. The bastards are lucky. There they are. On your command, my lord. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! For Azaria! For... Your petty revolution ends here. इनका हीलर है कोई, वो रहा हीलर, इसको मारो सबसे पहले. गया, डेड. दूसरा हीलर हो रहा. डेड. नाइस, लेट्स गो. अब मुझे किसी चीज का डर नहीं. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battles for them. More dragons. More dragons? The You're Imperials kidding aren't me? taking any chances. I can't say I'm flattered. This one. मैं कहाँ अटक गया ये? Nice try. Well done. Let's go. ओ भाई ये A कौन noble है? stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. अच्छा बेटा, तू करेगा मुझे क्लिंस. साले तू करेगा क्लिंस.
You need cleansing, motherfucker. You need cleansing. How the fuck, dude? Fucking evil motherfuckers. So wait. Found her. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. हीलर तो नहीं है यहाँ पे कोई. अबे मैं मर कैसे गया? मैं मर कैसे गया? अबे यार मैंने हेल्थ. अबे यार मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा. May the blessing of the Phoenix go with you. What the fuck भाई मैंने क्या किया ये? मैंने हेल्थ क्यों नहीं देखी अपनी? इनमें मर्चेंट है यहाँ पे. अबे यार रुक जाओ यार. मर्चेंट है. मर्चेंट में पोशंस ले लेता हूँ ना फिर. We'll keep them from the bridge. कहाँ दिख रहा है वो बाई करने वाला? शॉप. ये रही शॉप. हाँ इससे मैं वो ले लेता हूँ ना. पोशंस वगैरह ले लेता हूँ. Allow me to tend to your needs, my lord. 4 हैं. दो. As you wish, my lord. एलिक्सिर से क्या होता है? Instantly restores all HP. ये एक या दो. एक ही रख लेते हैं. Will that be all? स्ट्रेंथ टॉनिक. चलो 2 ये भी रख लेते हैं. Of course, my lord. I will be here should you need. और आइटम्स पे जाके स्ट्रेंथ टॉनिक लगा रखा है ना मैंने. हाँ डिफेंस की जरूरत नहीं होगी. What else? फकिंग हेल भाई. मर गया मैं. मैंने ध्यान ही नहीं दिया अपनी हेल्थ की साइड. Blessing of the Phoenix go with you. मैं इतना ज़्यादा फाइट में वो हो गया था. मैंने अपनी हेल्थ ही नहीं देखी कि मेरी हेल्थ भी डाउन है. यही नहीं देखा मैंने. अब जब मेरी पहली वाली फाइट होगी उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरी हेल्थ कितनी है. स्किप करो इसको. Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. वो हीलर गए हैं. मारो साले हीलर को मारो सबसे पहले. Bloody hell. Reinforcements from the far bank. Another wyvern to fight their battle for them. हेल्थ देखते रहनी है मुझे अपनी.
try. Let's try. More dragons. Works. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. ये तो क्या और ड्रैगन कहाँ है? मर गए? अब मुझे अपनी हेल्थ देखनी पड़ेगी, हेल्थ कितनी है, वरना मैं मर जाऊंगा। A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. बेटा पिछली बार तो मर गया मैं, इस बार नहीं। अबे मेरी हेल्थ तो काफी है, मैं मरा कैसे उस वक्त फिर? कुछ स्पेशल अटैक है क्या इसका जिससे मर गया मैं इतनी जल्दी? ऐसा क्या था भाई? ऐसा भी क्या अटैक था भाई इसका? ओह अच्छा, समझ गया। So wait. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You ain't finished अच्छा ये चूतिया आ गया अब यार। Fucking bitch! Sure. Let's go.
I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud! My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Quest complete. काजू कतली खाने का मन कर रहा है यार. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience. Especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. स्ट्रीम बिटरेट चेंज करने के लिए बोल रहा है यार, मेरे को ये पता नहीं क्यों. मैं ज़रा देखूं. ओपन सेटिंग्स, क्लिक आउटपुट टैब. ओपन सेटिंग्स, क्लिक आउटपुट. ठीक है. वीडियो बिटरेट. अच्छा. इसमें 1080 60 FPS.
ऑडियो बिट रेट भी चेंज कर सकता हूँ मैं। कितना बिटरेट बोल रहा है मेरे को? सजेशन कुछ दे रहा है ना मेरे को ये। ओपन स्टूडियो क्या सजेशन दे रहा है बार बार मेरे को? सिक्स 6800 kbps बिटरेट रखो ये बोल रहा है मेरे को। चलो कर देते हैं सेटिंग्स पे, अगर स्ट्रीम के बीच में ही हो जाए तो। 6800 ओके, लो लगा दिया मैंने बिट रेट। स्ट्रीम तो चल ही रही होगी मेरी अभी भी, एंड तो नहीं हो गई? चल रही है। सिक्स 6800 ही तो रखा है, अभी भी बोल रहा है कि तुम्हारी हाई है। वीडियो आउटपुट 6800। और इससे ज़्यादा क्या करूँ भाई, कर तो दिया मैंने बिट रेट 6800। चलो भाई। रॉसफील्ड मैनर कैसे पहुंच गए ये लोग? How accommodating. अच्छा, Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse the infectious
flax wench? Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Maddo in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. Oh my god, bro. I can imagine the happiness, bro. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. Good vibe, bro. Good vibes. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? On your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. शिप मिल गई भाई चलो Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days.
Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Back to headquarters. Let's go. Hideaway. अबे मैंने एक जगह एप्पल दिए, दूसरी जगह मैंने एप्पल ही नहीं दिए यार. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom, but Vivian could probably make an educated guess. दूसरी जगह तो देख के आ जाऊँ. एक वो प्लस वाला वो भी है. एक वो प्लस वाली साइड क्वेस्ट है, वो वाली भी करते हैं. चलो. प्लस वाली सारी साइड क्वेस्ट में वो होगा. How did we never hear? इसका फ्रूट नहीं दिया. Backyard. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, make Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martels, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards.
अब रिगार्ड्स भी पास करने पड़ेंगे मेरे को। रिगार्ड्स पास करने भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? That book. Do you think you might read it? बना तो सही रखा है इन्होंने हाइड आउट, पिछले वाले से तो काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, और मतलब जगह भी बड़ी प्यारी सी है, बढ़िया जगह पे बना रखा है ना? Read it? ये देखो क्या बढ़िया व्यू है। Could this place be any more confusing? I'm lost half of the time. The Cursebreakers sent their thanks. They were clearly very fond of Marta. They remembered her. After all, I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I did. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Let's go. चलो भाई मिशन करते हैं।
प्लस वाला वो भी करना पड़ेगा यार, प्लस वाले वो ज़रूरी है ना। थोड़ी ज़्यादा स्प्रिंट देनी चाहिए यार इसको इसमें ना, ताकि जल्दी जल्दी तो इधर से उधर कर पाऊँ। यहाँ पे क्या है? ऐसी है कुछ गिल के लिए। Oh, Clive. Well, The patron's wisp, does that mean... oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought I knew now. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Leave. I'll be here waiting. There are new billets being posted. शॉप पे जाना है हमें, तो गिल्स चाहिए थोड़े। फालतू की चीज़ें बेच देता हूँ ना। That monster's taken quite a liking. Well, don't just stand there gawping. स्वॉर्ड तो मेरे पे वैसे भी सबसे पावरफुल है ही। इनविक्टस बेचना मैं चाहता नहीं वैसे। ये बेच देते हैं, इसको क्या ही करना है। मैं इन सबका कुछ करता तो नहीं हूँ, बट इसमें होगा बेचने के लिए काफ़ी कुछ। क्राफ्ट ये I'll be thankful you got that much. You got out else? I'll be thankful you got that much. I reckon I can find a buyer. एक साथ बेच दो। Kill bug. You got out else? Crafting. Come again. Or don't. Blacksmith. I'm not much bothered either way. Back at ya. So, what it be? And how am I meant to do that then? फ्लेम टंग नहीं है मेरे पे। फ्लेम टंग मिल जाए तो ये वाली स्वॉर्ड मिल जाएगी। ये सब तो बेकार है, इससे पावरफुल है मेरे पे। नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तगड़ा ही है मेरे पे अभी। सब कुछ तगड़ा है। यहाँ सबको बेचो, इंडिया में सबको
मुझे लगता है तो लड़की देखनी होती है या तो वैलोरेंट ही देखना होता है. Come on, guys. There are new billets being posted every day. Clive! Oh, am I glad to see you? जितना देखता हूँ मैं हर जगह कोई वैलोरेंट देख रहा है, कोई बहनचोद लड़कियाँ देख रहा He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what do you say? I'll help. Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. First August. What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for. Now piss off. All right. We're going. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him, assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. Karen, Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy... Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened to cross him up. Makes all his stuff to order. But the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one.
Don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their eyes. See. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe... Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leatherwork. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. Use the hunt board to locate the griffin. Hunt board, okay. Typical nobles. What's the matter, Nectar? The hunt board? It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to... Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Right. The people of Alastia are going through a lot already. But with the Blight, the last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. And perhaps I can. डायलॉग स्किप करना बेस्ट रहता है यार. मतलब अगर मैंने पढ़ लिया नीचे तो डायलॉग स्किप कर दो. बेस्ट. Ask about Griffith sightings. इसको तो मैंने मार चुका ऑलरेडी. ये है ना. Norman Westgate Sandbrick. इसका ट्रैक मेरे को खुद ही करना पड़ेगा क्या? सैंडब्रेक में है ना ये? अबे तो सैंडब्रिक कैसे ढूंढूं अब मैं? शेयर नॉर्मन वेस्टगेट सैंडब्रिक. अच्छा, नॉर्मन वेस्टगेट. गॉट इट.
यहीं कहीं होगा ना ये। इस साइड तो नहीं है ये। वेस्ट गेट। कहाँ मिलेगा मुझे वो ग्रिफिन? ग्रिफिन कहाँ मिलेगा मुझे वो? Tell your curse breakers they're welcome in Lost Wing anytime, both for the coin they spend and... Typical nobles. How did we never hear about these guardians of the... Secure Norman West Gates. भैंचोद वेस्ट गेट कौन सा है यार? इसकी लोकेशन मुझे सर्च करनी पड़ेगी। अच्छा मैं समझ गया ये कहाँ पे है ये वहीं जहाँ मैं गया था, पर उसमें मुझे
कहाँ जाना पड़ेगा वो देखना है मुझे। समझ आ गया कहाँ है ये। समझ आ गया, इस साइड है ये कहीं, यहीं कहीं पे है ये। तो यहाँ जाने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मार्कर मैंने सेट कर दिया है। Good day to you. अंदर Sid. You're quite talented with that rod of yours. I've caught my share with it, as did my grandfather. No use calling Ambrosia now. ये बगल वाला रास्ता कौन सा है भाई? भैंस मैप देखना भी ऐसे झंझट का काम है। अब यहाँ से कैसे जाऊँ मैं? ऊपर से जाना पड़ेगा क्या? अबे यार, ये है रास्ता। इधर ही कहीं बताइए उसकी लोकेशन, तो इधर ही कहीं होना चाहिए। एक तो मैं वैसी साइड क्वेस्ट के लिए ढूंढ रहा हूँ बेंचर, ये मेरा दिमाग खाने और आ रहे हैं। तब टाइम नहीं है मेरे पे भाई, मेन क्वेस्ट भी करनी है उसके बाद मुझे। ये ले फिर आ गए ये। अबे भैंचोद, ये पौधे साले। मैं इसके बगैर क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ? अब तो कर ही सकता हूँ मैं इसमें ट्रैवल। यहीं कहीं है वो ग्रिफिन यहीं कहीं है वो ग्रिफिन। कितने एनिमीज है भाई यहाँ? वो है कहाँ वो ग्रिफिन? इधर ही कहीं है वो उसका एरिया। Don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. वो रहा।
भाई इसको मैं मार भी पाऊंगा? वो भाई लेवल 28 है भाई ये तो। ओ लेकिन तो गांड मार लेनी है। भाई इसने तो गांड मार लेनी है, सही बोल रहा हूँ। वो मार के तो रहूंगा मैं आज ही इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ही मार के रहूंगा इसको। कुछ भी हो जाए। वो यहाँ पोशन है क्या? क्या है ये? इसकी माँ का सवाल है। मार दूंगा मैं इसको। आई होप, आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा इसको मारने में। तो स्टैगर करना है यार एक बार, तभी तो डैमेज मिलेगा। अभी तो आधी हेल्थ भी नहीं हुई इसकी। Oh boy, it's staggered. एक बार ये स्टैगर हो जाए ना वापस से।
अबे पोशन तो सारे खत्म। अब तो हो जाए स्टैगर। अब हो गया ना स्टैगर। अब आएगी ना पावर उसकी। अब नहीं बचा सकता इसको मुझसे कोई। गया। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो भाई। गया ग्रिफिन भाई। लेवल अप भी हो गया इसके चक्कर में। क्या क्या मिला मुझे? मटेरियल। Something there, boy. Could that be our man? फेंक जो इतनी बड़ी फाइट के बाद। Are you all right? Dare say that griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. You remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She send you for a refund? It's not her who sent me. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art. And not... Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner, and I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did save my life, and thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. चलो ये सब मेन साइड मिशन कर लिया मैंने. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood.
भैंचो इतना लड़ के आऊँ मैं उससे भैंचो इसके लिए. She's taken quite a liking to And Lady with a bit of Karen. luck. How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times, too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor. And again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather-working community. Then we better keep this close to our chest. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This has cheered me right up. That was the idea. Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a Cursebreaker will have no trouble caring for. Anyway, enough narrowing. I've got work to be getting on with. Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better one out there. Nah, it wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted, I've got duties to attend to. Thanks, Clive. You've given me my mate back. Drake Slayer recipes unlocked. Drake Slayer recipes, you have obtained designs for Drake Slayer. Get design new crafting options. Shadow background with hide way for detail on. Clive. So, will it be? ये तो still. अरे यार फ्लेम टंग नहीं है ना मैं पे, वरना मैं ये बना लेता. बेल्ट इलेक्ट्रम नहीं है अब इसके लिए मैं पे, वरना ये बनवा लेता मैं. खुल तो गई चीज़ें बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका. गियर खुल गया बट वहाँ पे. गिव मी अ मिनट गाइस. ये रोज का हो गया है भैंचोद, रोज का हो गया है ये, रोज का हमेशा गिरता है यार ये.
कंट्रोलर तो इतनी बार गिर गया है भाई, मैं क्या ही बताऊं। हर बार गिरता है ये। भर लेते हैं।
तक 52% नहीं हो जाता गेम यार, तब तक तो खेलना ही पड़ेगा, तब तक तो खेलना ही पड़ेगा भाई। हर दिन भयंकर 10% पार हो रहा है। कल कोशिश करूँगा जल्दी स्ट्रीम करके जो ज़्यादा पार कर लूँ, ताकि वापस अपना ऑनलाइन गेम शुरू हो पाए। कम ऑन भाई, जो भी देख रहा है गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब भाई, डू लाइक मैन, कम ऑन, हिट द लाइक भाई, हिट द लाइक इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक भाई। और सजेशंस भी ड्रॉप करते रहा करो यार, क्या देखना पसंद है। एक इंसान बोलता है फाइनल फैंटेसी देखना है, फाइनल फैंटेसी खेल रहा हूँ, तो फाइनल फैंटेसी कोई देखने नहीं आता फिर। बड़ी वियर्ड है बात। बट क्या ही कर सकते हैं भाई, मैंने तो चैलेंज लिया भाई, मैं तो गिव अप करने नहीं वाला, मैं तो खेलूंगा ही खेलूंगा, है ना, मेरे को तो खेलना ही है। लेट्स गो, मिशन करते हैं। मैं यहाँ पे इसकी प्रोग्रेस भी देखता रहता हूँ साथ साथ कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। 47% हुआ है, 5-6% और करनी है अभी। Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold इतना बड़ा गेम है भाई ये। mainland soil when next they फिफ्थ डे है spy मेरा, opportunity. हर दिन 10% कंप्लीट कर पाता हूँ मैं इसको, अगर मैं 3-4 घंटे भी खेलता हूँ गेम, मैं 3-4 The घंटे भी mother गेम crystal खेलता हूँ is both the 10%। object of the Iron Blood's worship
and their gateway to the continent, making Drustinus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal, but thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Typical nobles. It will be over soon. You ready? मैं डायलॉग स्किप भी करता रहता हूँ अगर मैं नीचे सबटाइटल पढ़ लेता हूँ ना फटाफट से तो डायलॉग स्किप. When you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's Breath. No. मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ ना. The leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. ये भी रिवेंज के लिए जा रही It's है. what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together, all while Sid looks on. We'll make him proud. एक क्रिस्टल डिस्ट्रॉय किया हमने अभी तो 3-4 क्रिस्टल्स और बचे हैं भाई. अब कहाँ है हमारा वो इस बार रेड वाला क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करना है क्या? क्लाइव बढ़िया कैरेक्टर है भाई फाइनल फैंटेसी का. Useful trick. Freezing and throwing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. Come on guys, like the stream भाई, like the stream and subscribe नहीं किया तो सब करो भाई, जो भी देख रहा है. Let's go. पहुंच गए हम भाई. रेड कलर का क्रिस्टल दिख रहा है भाई मेरे को. There she is. मदर क्रिस्टल. The Iron Kingdom's Mother Crystal. अब इसको डिस्ट्रॉय करने का मिशन है. Drake's Breath. अब इसके अंदर भी कोई वैसा ही क्रिएचर होगा जैसे उसमें आया था. इससे पहले जो 5 साल पहले हमने डिस्ट्रॉय किया था उसके अंदर जो नहीं था वैसा ही इसके अंदर भी होगा मुझे लग रहा है. अब यहाँ पे जोशुआ वापस तो नहीं आएगा मुझे लग रहा है. जोशुआ नहीं दिखाया तब से Strong इन्होंने. currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them.
This island is a natural fortress. जोशुआ दिखाया ही नहीं. Safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. Right. Let's go. Fire and ice. I always imagined when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. They're all Akashic. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. मुझे इसमें फायर वाली ही बेस्ट लगती है वैसे एबिलिटीज में, सच बताऊं तो. थंडर वाली यार ओके, थंडर वाली की वाली एबिलिटी सही है. ये वाली जिसमें एक साथ तुम बहुतों को एम करो और फिर मारो, है एक साथ उड़ा दो इतने सारों. ये अच्छा है. गए सब. Was that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. अरे यार मैं पोशन वाली गलती से पोशन वाली चीज़ यूज़ कर देता हूँ यार. अब मैं ख़रीद के भी नहीं लाया पोशंस. मैं जा सकता हूँ क्या? प्रोग्रेस विल बी लॉस्ट. छोड़ो भाई, मुझे जाना ही पड़ेगा वापस. बहनचोद मैंने पोशंस ही नहीं खरीदे. द फक, क्या चूतिया बनती है यार. That monster's taking quite a like. Is it business or pleasure? If you're gonna buy something, be quick about it. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Elixir तो एक है ही मेरे पे. No way. You're rubbing me blind, you know. Finished, डिफेंस are वाला you? नहीं चाहिए होता मुझे. फक यार, क्या चूतिया बनती है. मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ. प्रोग्रेस लॉस्ट हो जाएगी पूरी. इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि हमने देख चुकी है ऑलरेडी, है ना. Strong currents, sharp rocks, and... ये सब देख चुके हैं हम ऑलरेडी. लेट्स गो.
मैं सिर्फ पोशंस लेने गया था वापस। साला मुझे वापस से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। मैं पहले ही पोशंस वाले ही उसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं अपने डॉग से अटैक करने के लिए बटन दबाता हूँ ना, गलती से पोशंस यूज़ हो जाते हैं जबकि मुझे यूज़ नहीं करने होते। मैंने अभी देखा पोशंस है ही नहीं मेरे पे। For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. They're all accounting. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. क्या बीटी है ये? कैसे कैसे मार दिया इसने मेरे को? कौन रोकेगा भाई मेरे को? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. उस वक्त कोई और एनिमी स्पॉन हुआ था ना यहाँ पे जब मैं आया था इससे पहले, अब कोई और हो रखा है। What the fuck? अबे शिट, That's better. Let's try. Get him. इसकी माँ बहन है वो वही। एनिमी लेना थोड़ा बढ़ रहा है यहाँ पे ना। एनिमीज को मारने में टाइम तो लगता है इसमें, इतना तो है। शिट यार, मैं कैसे डॉज नहीं हो रहा है उस चीज़, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा डॉज क्यों नहीं हो रहा। ये गलती कर दी मैंने बहुत बड़ी।
Breath of the Wild. ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड है कौन सी पावर? एरियल ब्लास्ट, अच्छा। ये तो मैंने लर्न भी नहीं की। Look at this place. What a mess. Wait. It's turned. Nothing a shelter for Zarya can't handle. सबसे पहले ये वाली जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। सबसे पहले तो भाई यार इसकी ब्रेथ अब क्या हो गया ये?
से भी आ सकता है क्या? ओए 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 ओए, हाँ पागल हो गया क्या? पागल हो गया साले, पागल हो गया। I still can't believe they can jump. But these things have roots. शिट, ओ मेरी एचपी कम हो गई। शिट, बड़ा वाला पोशन लगाना पड़ेगा। एक छोटा भी लगा ही लेता हूँ। अबे अबे मेरी आयरन वाली पावर क्यों नहीं आ रही? पाँच और 8 का डैमेज दे पाता है टॉर्गल यार, और तो कुछ कर नहीं पाता। इसकी माँ का साले, अब दिमाग मत खराब कर मेरा। अंदर घुस गया बहन का लोड़ा यार, मेरी वही चली गई। ओह शिट, मेरी एचपी। Staggered. गया फाइनली। आकाशिक, ये सारे भैंचो करप्टेड हो रखे हैं ना जो इससे मदर क्रिस्टल से, ये साले बहुत दिमाग खराब करते हैं। Fucking mother crystal bitch. Press on? Yes. It's like a furnace in here. Quest complete कर लेते हैं यार। You get used to the heat.
though I don't remember it being quite this hot. Was that one cause for concern? It was. And they're getting bigger. Something's wrong. मैं इनको लीव करके जा भी सकता हूँ यहाँ से जा सकता हूँ Oh, I guess not. अबे यार साले ऊपर के छोटे छोटे ड्रैगन इन्होंने दिमाग खराब कर रखा ये तो सब है दिमाग खराब Be. Nice try. Too slow. मारने में इतना टाइम लग जाता है यार आधे इनके लिए मर जा भाई मर जा तो डेड है ये ओ भाई अब जाके 50% हुआ है गेम पूरा Fuck. Is there no other way across? 50% अब हुआ है ये गेम पता था मुझे कट सीन आएगा अब ये आइस वाली है ना ये कुछ करेगी अब हाँ जमा दिया इसने Quickly, before it melts. This is going to be close. Come on! Let's not do that again. No. Let's not. That isn't too tough.
Whoa. Well, we aren't going this way. Let's look for another path. Drake's breath. We're nearly at the oratory. इस वाले क्रिस्टल के भी उसमें पहुंच गए हम. हार्ट ही बोलेंगे ना इसको. अबे ये क्या है? Exactly bro, मैंने भी यही सोचा देखते ही. Well, whatever it is, I don't think it's friendly. Nice try. मुझे लगता है इस पे इलेक्ट्रिक अटैक कम आएंगे. है क्या ये भैंचो स्लाइम सा. Nice try. मेरी शिट हेल्थ, मेरी हेल्थ. हाई पोशन. मारो यार. Too slow. Staggered. There. Phew. One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. भैंचोद एक बाई एक. Flame lizard. Seriously bro. मैं मरने वाला हूँ. Nice try. फ्लेम डैमेज कम पड़ेगा क्या इसको? हद होती है भाई. हर दूसरे मोड़ पे बॉस फाइट. Hold on.
ये क्या कर रहा है? Well done, Tom. Awakened wing! Flying hat. This one. Now, Torgal! To me, boy. What's it doing? Nothing good, I'll wager. I've heard Torgal. There's another way. I've heard Torgal. Help me, boy. To me, boy. Torgal, kill! Guess we're all ready. Now, Torgal! Torgal, kill! Get him! Torgal, kill! All yours, Torgal! I've heard Torgal. Nice try. To me, boy. I've heard Torgal. Too slow. To me! अरे यार, मैं यही बोल रहा था, मेरे पे स्पेशल पावर भी है। अब तो मर जा। मर गया भाई साहब।
अब तो मर जा बहनचोद, अब तो गिर जा बहनचोद। You hurt? Just hot. Thank you. Pani. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this before the heat finishes me. Here. We'll enter the Comric by the Handmaiden's living quarters. It was always a hive of activity. Ocean hoga na? Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. यहाँ पे क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी क्या? Lady Marley. It's me. Python Buffer. Jill, it can't be. It is, my lady. I cannot talk here. Come with me. I'm so glad you're safe. And I you. पहले मैं भाई Why ever would you risk coming back? इतने लंबे गेम्स के लिए मरता था कि भाई 30 घंटे 40 घंटे का कैंपेन हो और ऐसा कैंपेन हो, मतलब जैसे मतलब ये गेम ओवरऑल ऐसा गेम है जैसा मुझे, मैं बार बोलता हूँ रिपीटेडली, बताऊँ मतलब कॉम्बैट हार्ड भी है पर इतना हार्ड नहीं है कि मैं मरते ही रहूँ, मैं बिना मरे हुए भी जीत सकता हूँ, बस थोड़ा मुझे देर तक करना पड़ता है, इधर से उधर करना पड़ता है, थोड़ा हाथ दर्द होते हैं, अटैक पे अटैक, स्टाइलिश कॉम्बैट, स्टोरी लंबी, बट जब से स्ट्रीम करना शुरू किया ना लोग देखने ही तब आते हैं जब उनके पसंद का गेम हो। अब ये गेम बहुत अच्छा गेम है बट पुराना हो गया है, इसलिए इसमें व्यूज इतने नहीं आ रहे हैं, अब मतलब ज़्यादा लोग देखने आ नहीं रहे हैं, पर भाई मैं पर्सनली खुश हूँ इस गेम से बहुत। You must flee this place, gather your things and go. Now listen here, Jill. We have company. This way. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. My light in the darkness. Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life, promise me.
I'll live if you promise to do the same. Come on, Clive. We're nearly at the comwreck. All right. Here's our welcoming party. I've had enough of their hospitality. Over here! All yours, अबे मैंने R1 कैसे नहीं दबाया? पागल भाई। इन पे तो मुझे अपने स्पेशल मूव यूज़ करने का मन भी नहीं कर रहा इन चूतिए इन पे। यहाँ पे कोई लूट होगी मुझे लग रहा है। कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली जगह है। जब से साले एडल्ट हो गए ना, अब ऐसा होने लग गया है कि अभी भी मैं 24 से 30 घंटे के गेम बोलता हूँ, बट जब से स्ट्रीमिंग शुरू किया ना, अब लगता है कि अगर स्टोरी मोड गेम है तो 20 घंटे से नीचे का हो तो सही है, 3 दिन में पूरा भी हो जाता है ना। How many of them are there? और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है प्राइस में। खैर ये तो मुझे PS एक्स्ट्रा में मिल गया, बहुत लकी हूँ भाई। मुझे फाइनल फैंटेसी बढ़िया We're all ready.